South India is kicked off the week by visiting Telangana, where he went to Adilabad, launched a slew of projects and a number of very interesting political headlines that have emerged from that visit. Anytime now, the Prime Minister will be a part of a massive public program slated to take place in the YMCA grounds of Chennai. His second visit to Tamil Nadu in a matter of just about 5-6 days. The messaging is clear here. The BJP, the Prime Minister, is doing everything they can to go ahead and make inroads in South India. There are a number of challenges that they have to face, but they've got a strategy in place which we'll decode for you in just a bit. Let's begin this broadcast with the headlines. After RJD Supremo Lalu Yadav's ugly personal attack, Prime Minister Modi roars, "Bharat hai mera parivar." BJP biggies fight back with "Hum hai Modi ka parivar" slogan. आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। 3 days on, no arrests made in the IED blast at Bengaluru's Rameshwaram Cafe case. NIA takes over probe suspected link to Mangaluru cooker blast in 2022. Supreme Court rebukes Udayanidhi Stalin over his eradicate Sanatan Dharma remarks, says Stalin Jr. abused his rights and warns him of his role as a minister. Big setback for the Aam Aadmi Party. Top court asks AAP to vacate its party headquarters and look for an alternative plot. Says AAP is encroaching into land for Delhi courts. Trinamool Congress veteran Tapas Roy quits, claims Sandesh Khali horror and scams triggered him. Says he might consider joining BJP if approached. And no more notes for votes. Supreme Court overturns its own 1998 ruling, ends immunity for MPs and MLAs caught taking bribes. Prime Minister Modi hails the verdict. Now, after Lalu Yadav's comment on Modi's parivar, it looks like this is a concerted strategy of the India bloc to take on Prime Minister Modi, because the latest reaction that's coming in is from Akhilesh Yadav, who's also mocked the Prime Minister over this entire issue of his family. Akhilesh has mocked the BJP's "Hum Hai Modi Ka Parivar" campaign, saying that BJP, like a long-lost family united at a mela, has come together now, mocking this campaign that's been launched by the BJP. Remember, you had several union ministers, top BJP leaders saying, "We are Modi ka parivar." They put that out on social media as well. But it looks like the India bloc has decided to go ahead and counter this narrative by actually backing what Lalu Yadav has said. Akhilesh now taunting, saying it looks like a long-lost family that's united at a mela. Something like that is happening now with the Prime Minister. What's very clear is that the opposition is sticking by what Lalu Yadav has said. This despite the fact that the BJP has made it very clear that they're going to now make Modi ka parivar as a big campaign slogan running up into the election. Now, since in fact the 2014 campaigning days, you had Prime Minister Modi and the BJP being successfully able to turn personal attacks on Narendra Modi to their advantage. Again this time, just ahead of the elections, just as we're getting into the poll fever, you have Lalu Yadav making a personal attack on Prime Minister Modi, asking why Modi doesn't have any kids. And once again, Modi countered it, this time in Telangana's Adilabad, where he said that the entire nation is my family. Modi! 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 Rewind to 2014. नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। A jab that the BJP and its Prime Minister candidate, Narendra Modi, turned into political gold a decade ago. चाय बेचने वाला
प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। देश बेचने वाले देश पर राज करने चाहिए क्या? भाइयों बहनों, देश बेचने वालों से अच्छा होता है चाय बेचने वाला अच्छा होता है। The tea vendor comment became the BJP's rallying cry and a dig at Congress in 2014. Fast forward to 2019. Congress leader Rahul Gandhi made the Chaukidar Chor Hai remark. राफेल घोटाले में 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के एयरफोर्स से चोरी करके नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में जेब में डाला है। चौकीदार चोर। Gandhi aimed this comment at Prime Minister Narendra Modi over the Rafale deal, seemingly to poke fun at the Prime Minister's "Main bhi Chaukidar" campaign in 2019. Rahul Gandhi then had to apologize for wrongly attributing his remarks to the top court. Now, in 2024, with elections looming, RJD leader Lalu Yadav launches a personal attack, saying that Prime Minister lacks a family. मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको होगा बताओ। Prime Minister Modi hits back swiftly and forcefully, declaring the entire nation as his family. देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। What ensued was a description of Modi ka parivar added to the social media handles of top BJP leaders and ministers. Once again, Prime Minister Modi and the BJP demonstrate a knack for turning every adverse political and personal attack into a political advantage. Bureau Report, India Today. All right, let's now cut across to Chennai. The Prime Minister's just touched down there, the YMCA grounds. He's going to be speaking any moment now. Remember that the Prime Minister just a few days ago was in Tamil Nadu when he visited Tirunelveli, he visited Thoothukudi among several other places, and in each one of those locations he spoke of Tamil culture, he spoke of Tamil tradition and how much he appreciated it, even saying that I wish I could speak the language when he got rather emotional. The fact that he's putting the focus on tradition and culture speaks volumes of what Modi is really doing in trying to ensure that the BJP makes inroads in a state like Tamil Nadu, where they've largely always been perceived as a North Indian party, as a Hindi party. I want to bring in Pramod Madhav on this broadcast. He's joining us live from the rally venue. Pramod, the Prime Minister's just touched down. Give us a sense of the mood on the ground. What are the crowds like? Absolutely, Akshita. This is sort of the city. This place is called as Nandanam, and here we have the YMCA grounds, and behind us you could see the kind of like grand ceremony that was given for the Prime Minister. You have like large elephants and everything, a kind of like banana trees tied to all the places, and on one side, the major picture that you see over here is that of Annamalai, the BJP state president. We have JP Nadda, and Prime Minister's image each and everywhere is shown him wearing the dhoti and also having the mundu. So this is the kind of welcome that has been provided over here, and the very important aspect is that this is the fourth place he's addressing in 1 week, Akshita. Last week alone, he went to Tirupur Palladam.
He went to Tiruchendur, he went to Thoothukudi, and this is the fourth place, that too in Chennai. He is going to address the public, and the public are inside. There is a kind of like a mood change that we've been seeing from year after year. Back to you. And These what the are Prime live Minister is images also that you see right now from inside the YMCA grounds. A sea of saffron there. This is, remember, a BJP event that the Prime Minister is attending. Right by his side is, in fact, the Tamil Nadu BJP chief Annamalai along with Union Minister Murugan. Very, very similar to the images that we've seen in the last few days. So the Prime Minister was campaigning in Palladam, in Tirunelveli, in Thoothukudi as well. And there you have the Tamil Nadu BJP chief right now felicitating Prime Minister Modi to a huge, huge cheer from the ground. So you can see, in fact, that all BJP workers have gathered here. What is important to note is that the Saffron Party has been pulling all stops for these campaigns, ensuring that cadre is brought together from across the state to send out a message that the BJP is a serious contender in the upcoming elections in Tamil Nadu. You've got more BJP leaders felicitating him, including Vinod Selvam there on stage felicitating Prime Minister Modi. All the BJP leaders coming together right now to felicitate the Prime Minister. They know full well the importance of each of these campaigns by Prime Minister Modi, and this is just the beginning of many more to come. From the beginning of this year, in fact, the Prime Minister has been aggressively campaigning in several southern states, but much more so in a state like Tamil Nadu, where the BJP this time is really fancying their chances and believe that in the last leg of the campaign, if the Prime Minister's campaigning, if the Prime Minister's rallies are increased in number, that's going to ensure that it yields results for them as well. Let me bring in Pramod Madhav once again on this broadcast. Pramod, we see scores of BJP workers who've gathered for this particular rally. The Saffron Party is essentially sending out a message here that when the Prime Minister touches down in Tamil Nadu, they will pull all stops to ensure that these rallies are a mega success, because it sends out a larger message in the political landscape. It sure is, because in the last 2-3 years, Annamalai has made it very clear, be it El Murugan or be it Annamalai, that the crowd has increased, the popularity of BJP has increased, and that's what you see over here. In fact, nearly 15,000 police have been placed at this spot to maintain law and order and the crowd responsibility as well. And this particular road, like I said, it's the heart of the city, and this is where the Prime Minister is actually addressing the crowd. Earlier, be it Tirupur or be it Tiruchendur, the issue here is that he has made it very clear that he is not a stranger to Tamil or Tamil Nadu, and that's the reason BJP also constantly says that, like, every time the Prime Minister, not only in India, even in out abroad, he's one person who has actually promoted Tamil and also Tirukural, and those things are all reflecting at this spot. This entire area has been converted into a kind of like a festival location, because for them, after nomination, the Prime Minister is going to address the public at this rally. So for BJP, it's very, very important, and that's what they want to show. In fact, earlier while Annamalai was speaking about this, he very clearly mentioned that when the Prime Minister, Annamalai believes that he will win with over 400 seats, and at that point 39 seats will be from NDA alliance from Tamil Nadu. Now there is a checkpoint over there because the former strong ally AIDMK is not with them. However, Annamalai believes that the Prime Minister can pull his magic in Tamil Nadu this time, and he said that the cadres of BJP after Enmakal also, they will have to work for the next 60 days, making sure that they will send MPs from Tamil Nadu. All right, Pramod, I'm going to come back to you for all of those updates, but let's just break down right now what the BJP's Mission South blueprint looks like. As we continue getting you those live images, I want to put out right now the strategy of, in fact, the BJP on how they're going to ensure that they increase their tally in the upcoming elections and also in the long run. Because while you're seeing steps being taken now, in the next few months and after the elections, you're going to see them focusing on the assembly polls as well. First, as you see there, the Prime Minister will be campaigning aggressively in all of these states. Expect that in the next few weeks, there will be a lot more visits to several other South states, just like he's focusing on Tamil Nadu. Booth-level committees have been set up in every state. This is a strategy that's worked for the BJP in North. So they're hoping that this will help in kind of increasing their cadre base, which is obviously the first step in ensuring that the party's presence increases in several of these states. Focus on development and not religion-based politics, because it hasn't reaped any dividends for them in the past, which is why even the Prime Minister, in all of his speeches in the South in the last few days, there's no mention of Ram Mandir, there's no mention of religion-based politics. There's focus on what the central government has done, what the BJP's campaign is all about. Besides that also, when you look at what he's done in
in Tamil Nadu. This is something I referred to earlier as well. Constantly referring to the richness of tradition, to the cultural richness also that states like Tamil Nadu have, and focusing on that to kind of say that, look, we appreciate what Tamil Nadu stands for. In these states where regionalism is a big player in politics, the BJP has recognized that, and that's why the Prime Minister's speeches also echo that sentiment. Also, what we're seeing is several senior ministers and faces of BJP being deputed in some of the south states. They're going to be fighting, we hear, in several of these states. Rajiv Chandrasekhar is one example from the first list, but besides that, there have been several reports that suggest Nirmala Sitharaman, Jai Shankar, all of them could be deputed in the southern states. So some of the biggest faces of the Modi cabinet are also fighting this south battle. But why is it so crucial for the BJP to ensure that they increase their numbers in the south? Why does the BJP want south? Well, as far as that 400 par narrative is concerned of the Prime Minister's, that mission is dependent on making inroads in southern states. If they don't manage to get their tally up in these states, there's no way they can reach Mission 370 or, for that matter, 400 par. Also, their constant narrative has been to get rid of the Congress. They've largely succeeded in that in the Hindi heartland. But the Congress takes solace in how they perform in the south. The BJP, if they want to displace Congress completely from their last remaining strongholds, will have to ensure that they capture Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Kerala as well. They also want to ensure that they fully consolidate electoral control over the country. Because so far, while they've managed to sweep elections, create this huge narrative of a Modi wave in north, central parts of the country, in the south, that hasn't worked just yet. So they'll have to prove their mettle that this is a party that performs across India. Also, remember that several of the south states are economic powerhouses. They're IT hubs. They're extremely crucial. They're industrial hubs too. So to kind of reinstate that message that the Prime Minister cares about these economic powerhouses and that they choose the BJP, and to reinstate that narrative of Modinomics, winning these states is extremely crucial. So the Prime Minister is on his big southern sojourn again, because as I mentioned, he's going to be aggressively campaigning in all of these states to connect with voters in Kerala, Telangana, Tamil Nadu, Karnataka and also Andhra Pradesh. He started off today by visiting Telangana's Adilabad and now of course is in Chennai as well. BJP hasn't fared very well in these states in the past. They're looking to turn that around. Prime Minister Modi officially kicked off BJP's election campaign in January in Kerala's Thrissur with a rally of over 2 lakh women. Over a month later, on 28th February, the Prime Minister was in Tamil Nadu, where he launched projects worth over 17,000 crore rupees and launched a fierce attack on the DMK. तमिलनाडु में कई अखबार हैं, कई टीवी चैनल हैं जो इन खबरों को छापना चाहेगी, दिखाना चाहेगी, लेकिन यहां जिस प्रकार की सत्ता है वो उनको ये नहीं करने देगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम तमिलनाडु की सेवा में कभी रुकेंगे नहीं, विकास के कामों को अटकने नहीं देंगे। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। भारत सरकार के प्रयास से आज तमिलनाडु में आधुनिक कनेक्टिविटी एक नई ऊंचाई पर है। On Monday, the Prime Minister was back in Tamil Nadu's capital. It's clear that to achieve its target of 370 seats, the BJP is focusing big on the south. Earlier on Monday, the Prime Minister was in Telangana's Adilabad.
आजादी के इतने दशकों तक उस योगदान को कभी सम्मान नहीं दिया गया। 2014 के बाद बीजेपी की केंद्र में सरकार ने तेलंगाना के विकास को, आदिवासी समाज के सम्मान को इतना महत्व दिया। It was in Telangana that the Prime Minister gave Mera Parivar war cry. भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मेरा जीवन खुली किताब जैसा है और जब मैंने अपना घर छोड़ा, एक सपना लेकर के चला था, देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana and Andhra Pradesh together have 129 seats. Sources say that the BJP's key focus this time will be 84 seats in South India, declared weak, that the party has never won. The number is crucial for NDA's 400 par target. Will it be able to breach the southern bastion? Bureau Report, India Today. So on one hand, you've got Rahul Gandhi constantly targeting Prime Minister Modi, targeting Gujarat and the development there. Chief Minister, the Congress Chief Minister in Telangana, Revanth Reddy, sharing the stage with the Prime Minister, heaped praises non-stop on Prime Minister Modi, called him Bhade Bhai, called him Big Brother, spoke in Hindi during his conversation with the Prime Minister, particularly directly addressing him and saying, we want the growth that Gujarat has seen in Telangana. We want to achieve your dream also of ensuring that our economy grows, of ensuring a $5 trillion economy. It was surprising and it looked like the Prime Minister also on stage was rather amused when Revanth Reddy started heaping praises on the Prime Minister, saying that for Telangana to grow, we want you and your dream also to be achieved. नरेंद्र मोदी जी, हम हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ये हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है तो यहाँ पर आपके मदद जरूरी है। So that's the comment by Revanth Reddy that's going viral on social media right now. I'm slipping into a very short break here on 6 p.m. Prime. Coming up on the other side, the big news break coming in from Karnataka. Remember the pro-Pakistan slogans that were raised in the Karnataka Assembly? Well, forensic reports have suggested that yes, it's true. We're getting you a big update on 3 arrests that have been made as well.
சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது. The Supreme Court has pulled up DMK leader and Tamil Nadu minister Udayanidhi Stalin over his controversial remarks on Sanatan Dharma. The top court on Monday said that he had abused his rights in making the comments against Sanatan Dharma. The court added that Udayanidhi is a minister and not a layman and should have been aware of consequences of his statements. Udayanidhi had moved the Supreme Court to get the multiple FIRs registered against him in several states clubbed together. Udayanidhi, son of Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, had compared Sanatan Dharma with dengue and malaria and said that it should not just be opposed but eradicated. சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். The BJP was quick to slam Udayanidhi and the DMK government, accusing them of targeting Hindus. DMK seems to be scared. Otherwise, there would have been no reason since around several months and a year when they have unnecessary, or I will say deliberately with the design, have started propagating this type of dastardly ideas like eradication of Sanatan Dharma. With the Lok Sabha battle just months away, the BJP is leaving no chance to corner DMK and India Bloc. Survey done by India Today in September last year on the political impact of Udayanidhi's statement showed that 43% people felt that the statement will hurt the India Bloc. 14% participants said that the statement by Udayanidhi would benefit the NDA government in the polls. 50% participants also said that the statement by Tamil Nadu minister was hate speech. 56% respondents said that they were hurt by Stalin Jr.'s statement. Will the issue have an impact on the Lok Sabha elections remains to be seen. With Shrishti Ojha in New Delhi, Bureau Report, India Today. நண்பர்களே, எனக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் இடையேயான உறவு மிக பழமையானது. நீங்கள் என் மீது பொழியும் இந்த அன்பும் கூட மிகவும் பழமையானது. ஆனால் இங்கே சில ஆண்டுகளாகவே நான் தமிழ்நாட்டிற்கு வரும்போது சிலருக்கு வயிற்று வலி ஏற்படுகிறது. வயிற்றிலே புளியை கரைக்கிறது. காரணம் என்ன தெரியுமா? காரணம் பாஜகவுக்கு மக்கள் ஆதரவு தொடர்ந்து வலுவடைந்து வருகிறது என்பதுதான். இன்று சென்னையிலே இதை நாம் தெளிவாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நெடுந்தொலைவுக்கு மக்கள் வெள்ளம் திரண்டிருப்பதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.
साथियों, मोदी ने विकसित भारत के साथ साथ विकसित तमिलनाडु का संकल्प लिया हुआ है। हमें जल्द ही भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनाना है। इसमें तमिलनाडु की, चेन्नई की भी बड़ी भूमिका है। भारत सरकार चेन्नई जैसे शहरों को विकसित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। हमारी सरकार द्वारा चेन्नई में हजारों करोड़ रुपए के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन हो, पीने के पानी और सीवेज मैनेजमेंट के लिए अमृत स्कीम हो, चेन्नई मेट्रो और चेन्नई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट हो, हमने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया है जिससे यहां ईज ऑफ लिविंग बढ़े। चेन्नई पोर्ट से मदुरवायल के बीच कॉरिडोर बनाने के लिए भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। நண்பர்களே, மோடி வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தோடு கூடவே வளர்ச்சியடைந்த தமிழ்நாட்டிற்கான உறுதிப்பாட்டையும் மேற்கொண்டிருக்கிறேன். நாம் மிக விரைவாக பாரதத்தை உலகின் 3 தலை சிறந்த பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாக ஆக்க வேண்டும். இதிலே தமிழ்நாட்டின் சென்னையின் பங்களிப்பு மிகப்பெரியது. பாரத அரசு சென்னை போன்ற நகரங்களின் வளர்ச்சிக்காக தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறது. நமது அரசாங்கம் வாயிலாக சென்னையில் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நகர்ப்புற கட்டமைப்பு திட்டங்கள் தொடர்பான பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன. அது ஸ்மார்ட் நகரங்களாகட்டும், குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் மேலாண்மைக்கான அம்ருத் திட்டமாகட்டும், சென்னை மெட்ரோ மற்றும் சென்னை விமான நிலைய திட்டங்களாகட்டும், சென்னை வாசிகளின் வாழ்க்கை மேம்பாடு அடைய வேண்டும் என்பதற்காக நாம் வாழ்க்கை வாழ்வதில் சுலபத்தன்மை வேண்டும் என்பதன் பொருட்டு பல திட்டங்களை முன்னெடுத்து சென்றிருக்கிறோம். சென்னை துறைமுகத்திற்கும் மதுரவாயிலுக்கும் இடையேயான காரிடார் இடைவெளியை ஏற்படுத்தவும் கூட ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் செலவு செய்யப்பட்டு வருகின்றது. साथियों, केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच डीएमके सरकार ने चेन्नई के लोगों की जरूरतों से, आपके सपनों से मुंह फेर रखा है। अभी कुछ समय पहले इतना बड़ा साइक्लोन आया, चेन्नई के लोगों को इतनी परेशानी हुई, लेकिन डीएमके सरकार ने मदद करने की जगह लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया। डीएमके के लोग संकट के समय फ्लड मैनेजमेंट नहीं करते, बल्कि ये मीडिया मैनेजमेंट करने में लगे रहते हैं। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ था, लेकिन ये लोग मीडिया से कह रहे थे कि सब ठीक हो गया है। इसी से पता चलता है
कि डीएमके सरकार को जनता के सुख दुख से, आपके सुख दुख से कोई मतलब नहीं है. நண்பர்களே, ஒருபுறம் மத்திய அரசு தமிழ்நாடு மற்றும் சென்னையின் எதிர்காலத்திற்காக பணியாற்றி வருகிறது. ஆனால் மறுபுறத்திலோ மாநிலத்தில் அதிகாரத்தில் இருக்கும் திராவிட முன்னேற்றக் கழக அரசு சென்னை வாசிகளின் தேவைகளை, அவர்களின் கனவுகளை கண்டுகொள்ளவே இல்லை. சில காலம் முன்புதான் மிகப்பெரிய புயல் வந்தது. சென்னை வாழ் மக்களுக்கு ஏகப்பட்ட துயரம் உண்டானது. உண்டாச்சா? உண்டாச்சா? அங்கே இந்த குரலே வரல. நான் சொல்றது சரியா? இன்னும் சத்தமா தில்லி கோட்டை வரைக்கும் கேட்கணும். புயல்னால இங்க வெள்ளப்பெருக்குனால கஷ்டம் உண்டாச்சு. ஆனால் திமுக அரசாங்கம் அவதிப்படும் மக்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டுவதற்கு பதிலாக அவர்களுடைய துயரத்தை மேலும் மேலும் அதிகப்படுத்தும் வேலையை செய்திருக்கிறது. திமுகவை சேர்ந்தவர்கள் பெருவெள்ள பெருந்துயர் காலத்திலே வெள்ள மேலாண்மையை செய்வதில்லை. மாறாக என்ன செய்கிறார்கள்? ஊடக மேலாண்மையை செய்கிறார்கள். ஊடகங்களை சரிகட்டுகிறார்கள். சரியா? மக்களின் வீடுகளுக்குள்ளே வெள்ள நீர் நிரம்பிவிட்டது. ஆனால் இவர்கள் ஊடகங்களிலே என்ன சொல்லுகிறார்கள்? பாலும் தேனும் ஓடுகிறதாம், வெள்ள நீர் ஓடவே இல்லை என்கிறார்கள். திமுக அரசாங்கத்திற்கு மக்களின் துக்கங்கள், துயரங்கள் பற்றியெல்லாம் சுத்தமாக அக்கறை இல்லை, கவலை இல்லை. தமிழ் மக்களே, உங்களை பற்றியும் கவலை இல்லை, தமிழ்நாட்டை பற்றியும் அக்கறை இல்லை என்பதுதான் இதிலிருந்து நன்கு தெரிய வருகிறது. साथियों, बीजेपी की केंद्र सरकार संवेदनशील है और गरीब की चिंता करने वाली सरकार है. कोरोना महामारी में हमने सबसे पहले गरीबों के लिए मुफ्त राशन की चिंता की. जब देश ने अपनी वैक्सीन बनाई तो हमने तय किया कि हर व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन मिले. तमिलनाडु तो एमएसएमई सेक्टर का लीडर स्टेट है. हमारी एमएसएमई को नुकसान न हो, इसके लिए हमारी सरकार ने तमिलनाडु की लाखों एमएसएमईज को हजारों करोड़ रुपए का क्रेडिट भी दिलाया. நண்பர்களே, பாஜகவின் மத்திய அரசு புரிந்துணர்வு உடைய அரசாங்கம், ஏழைகளின் நலனையே கருத்தில் கொண்டு செயல்படும் மக்கள் அரசாங்கம். கொரோனா பெருந்தொற்றின் போது நாம் முதன்மையாக ஏழைகளுக்கு இலவச ரேஷன் பொருட்களை வழங்க ஏழைகள் நலனில் அக்கறை கொண்ட நமது அரசு ஏற்பாடு செய்தது. தேசம் தனக்கென சொந்தமாக ஒரு தடுப்பூசியை உருவாக்கிய போது அனைவருக்கும் இந்த தடுப்பூசி இலவசமாக கிடைக்க வேண்டும் என்று ஏழைகள் நலனில் அக்கறை கொண்ட நமது அரசாங்கம் தீர்மானம் செய்தது. தமிழ்நாடு சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் துறையில் முன்னணி மாநிலம் என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும். நமது சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காகவே நமது அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டின் லட்சக்கணக்கான சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக கடன் வசதி அளித்தது.
साथियों, बीजेपी की केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए भारत सरकार अनेक योजनाओं का पैसा सीधे यहां के लाभार्थियों को भेज रही है। डीएमके को दिक्कत इसी बात से है कि लाखों करोड़ रुपए का ये लाभ सीधे तमिलनाडु के लोगों के अकाउंट में पहुंच रहा है। आज टॉयलेट्स, गैस कनेक्शन, नल से जल कनेक्शन, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, सड़क, रेल, हाईवे, पोर्ट, सब पर काम हो रहा है। लाखों करोड़ रुपयों के इन विकास कार्यों को लूटने में डीएमके के लोगों को मुश्किल आ रही है। इस बात से यहां की एक फैमिली बहुत परेशान है। इसलिए ये डीएमके के लोग सोच रहे हैं कि अगर पैसे नहीं तो कम से कम इन कामों का क्रेडिट ही खा सके, लेकिन उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही। मैं डीएमके को बताना चाहता हूं, मोदी तमिलनाडु के विकास का पैसा आपको लूटने नहीं देगा और जो पैसा आपने लूटा है वो वसूल कर वापस तमिलनाडु के लोगों पर खर्च किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। இது மோடியின் கேரண்டி। நண்பர்களே, பாஜகவின் மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்காகவும் முன்னேற்றத்திற்காகவும் கச்சை கட்டிக்கொண்டு பணியாற்றி வருகின்றது. இதன் பொருட்டு பாரத அரசு பல திட்டங்களின் தொகையை நேரடியாக இங்கே பயனாளிகளுக்கு அனுப்பிவிடுகிறது. லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய் ஆதாயங்கள் இப்போது நேரடி DMK seems to be scared. Otherwise, there would have been no reason since around several months and a year when they have unnecessary, or I will say deliberately with the design, have started propagating this type of dastardly ideas like eradication of Sanatan Dharma. I think DMK is still relying upon that old age, outdated, divisive ideology which has been totally rejected by the people of the country, an epoch-making paradigm shift which has been started under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. Now a new wave will emerge from south and will reach to its ultimate conclusion. No, see, each and every, even a kid will know that Sanatan Dharma is a Hindu religion. That is what even Veeramani, the leader of DK, even in that stage, he was very clear where Udayanidhi spoke. He was very clear saying that both Sanatan Dharma and Hindu religion are same. And see, even a small kid knows that Sanatan Dharma is the Hindu religion what we practice now. मनोज तिवारी जी है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8वें समन को फिर गैर कानूनी बताया और ये कहा कि 12 मार्च के बाद वो इस बात का जवाब भी देंगे और वर्चुअल ही करेंगे।
किसी मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी के सवालों से डरते हुए थर-थर कांपते हुए मैं पहली बार देख रहा हूं और आश्चर्यचकित हो रहा हूं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, जहां शपथ ही ली जाती है। मैं शपथ लेता हूं, ईश्वर की शपथ लें या जिसकी भी शपथ लें, कि मैं संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और उसके बाद भी कानून का पालन नहीं करेंगे। 8वां सम्मन आया और उसके बाद भी बहाने कर रहे हैं, ऐसे डर रहे हैं। नहीं, मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऐसा लगता है बोलते ही उनको धड़ाक से कोई खींच लेगा। हम लोग कई बार पुरानी फिल्म देखते थे ना, वो कि जिसमें एक आदमी को इतना डर लगता है कि मुझे आते ही कोई आएगा हाथ और कटाक से पीछे खींच लेगा। अरविंद केजरीवाल जी, आपके भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुके हैं और ट्रायल कोर्ट कह चुकी है कि नहीं, आपको लीगली जाकर के जवाब देना है। आपके ऊपर आरोप है, आपके मंत्री जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। उसके बाद भी उनको ये लगता है कि सम्मन पे नहीं जाने से और वीडियो कॉन्फ्रेंस में रहने से आपके ऊपर सवालों के बाद जो कार्रवाई होनी है वो नहीं होगी। और आपको लगता है कि खाली बोलने से प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी है। ईडी जब बात करेगी तो लिखेगी भी और लिखने के बाद उस पर क्रॉस क्वेश्चन करेगी, तभी तो निर्णय लेगी कि आपको जेल के अंदर डालना है या आप बरी हैं, आपको बाइज्जत भेजना है। तो ये जो मैसेज दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उसमें स्पष्ट हो गया है। और मैं समझता हूं, एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूं, अब ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ और ढील नहीं।